अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आमना, आप देख रहे हैं आही। एंड आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि आपको जैसे कि मालूम होगा कि मैंने अभी अभी एक सीरीज़ ऑफ पॉडकास्ट शुरू किया है जिसका नाम है इनर स्टार। और उसका क्या मकसद था उसको शुरू करने का और किस किस को देखना चाहिए, मैं उम्मीद रखती हूँ कि कौन कौन देखेगा और इसको लेके हम आगे कहाँ जाएंगे। आई वांट टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब मैंने आही शुरू किया तो इट वाज बेसिकली टू टैप इनटू a side of journalism that I've always sort of dabbled in my career, which was fashion, lifestyle, culture, music, everything that I associate with, but not necessarily that could be covered in entertainment on something hot. तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरा मुझे एहसास हुआ कि with the number of letters I was receiving from all of you from all over the world, and there were girls as young as 12 to 13 years old, teenagers, जो कि मैं कभी नहीं सोच सकती थी that I would connect with that age group, to older women who were inspired by my life, my journey, the way I dress, the way I talk, all of that. I just realized that ये एक बहुत हमारा solid platform बन सकता है to connect with all of you all over the world, to build a stronger community of women. I do believe that women are very strong, and I do believe that there is a star inside every single woman. वो बेशक एक सेलिब्रिटी हो या वो एक वर्किंग वुमन हो, वो एक हाउसवाइफ हो, वो एक कॉर्पोरेट करियर रखती हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, कोई भी हो, सब में कोई ना कोई ऐसी खसूसियात होती हैं जो कि उनको एक स्टार बनाती हैं. But it's just that because of external circumstances, because of life, because of society, कभी कभी हम वो हमारे अंदर का जो स्पार्क होता है उसको उभरने नहीं देते, वो उभर नहीं पाता एंड वो दब जाता है. सो दैट इज़ आई थिंक one of the misfortunes of being a woman in today's world. So, to combat that and to sort of motivate women to find their inner star, I thought of this series. And as you all know, and I've spoken about this so much, that I turned 50 last year. और जब मैंने 50 हिट किया तो एक तो 40 पे मेरी डॉक्टर ने मुझे कहा था कि भाई तुम्हारे जो तुम्हारा वज़न है और तुम्हारा जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ना तुम एक्सरसाइज करती हो ना वॉक करती हो, this is going to hit you like a ton of bricks when you hit 40. And in a way it did, because वो जो है ना घुटनों में दर्द, पाँव में दर्द, swelling हो जाना, all of that started happening. I was very lucky, and I think because I very consciously keep and maintain a positive outlook on things, so I was saved from a lot of ailments that I could have suffered from with my weight. I could have gone, towards high blood sugar, diabetes, other problems, high blood pressure. मतलब है कि बहुत कुछ हो सकता था, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ. लेकिन जैसे जैसे साल गुजरे मेरी मोबिलिटी भी कम हो रही थी, मेरी फंक्शनैलिटी भी कम हो रही थी, तो मुझे एहसास हुआ कि आई रियली नीड टू डू समथिंग. बिकॉज व्हेन आई लुक एट माय पेरेंट्स, they have both been fairly active through their lives, लेकिन अब्बू अब in his mid 80s वो कुर्सी पे बैठ के उठ नहीं पाते और उनको सहारा चाहिए. उसकी वजह से ही स्टॉप ट्रैवलिंग, उसकी वजह से ही स्टॉप विजिटिंग रिलेटिव्स, गोइंग आउट. तो वो एक अपने घर की चार दीवारी में रह गए जहाँ उनका कंफर्ट जोन है. मतलब वो मेरे घर ही हैजंट ट्रैवल्ड इन गॉड नोज हाउ मेनी ईयर्स बिकॉज new environment. And anyway, I'm completely rambling, but the purpose was that by the time you hit 50, you will either sink or you will swim for the rest of your life. And to be able to float and swim and be active and healthy and happy, because ye sab interconnected hain, you have to work on it in your 20s, your 30s, your 40s, so that by the time you're 50, you have such good core strength that you will breeze through the next couple of decades. This was the purpose behind it. Okay, how to motivate women that by the time they are 50, their food habits need to be healthy, because that is primary. आपकी जो nutrition है वो ही आपको सहारा देती है. That is the building block. उसके बाद योर फिटनेस लेवल, आपका मसल बिल्डअप, आपकी बोन स्ट्रेंथ, वो कितनी ज़रूरी है. आर यू टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड फिटनेस? एक्सरसाइज आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? फिर other areas associated, and I want to talk about the episodes very briefly. I'll touch upon them. So that was the purpose behind it. And it wasn't targeting women in their 50s, but women 20s, 30s, 40s, everybody. So yeah,
this was it, because I do feel that women are very strong and I do feel that we have mastered the balancing act कि औरतें जो हैं वो अगर घर भी देखती हैं, अगर नौकरी भी अगर करती हैं, बच्चे पैदा भी करती हैं, पालती भी हैं, उनकी तरबियत भी करती हैं, अपने माँ बाप का भी ख्याल रखती हैं, अपने नेक्स्ट जनरेशन का भी रखती हैं. And it's such a multitasking job that, frankly speaking, men can't do. So we are masters of the balancing act, but unfortunately, most of us put ourselves on the back burner. We are mastering the act of balancing life for other people. कि हमारे सबसे पहले माँ बाप हमसे खुश हों, फिर हमारे spouses हमसे खुश हों, उसके बाद हमारे बच्चे हमसे खुश हों, खुश ना भी हों, but that they're sorted, that everything around us is sorted, and we keep ourselves on the back burner and we're kind of second grade citizens in our own world. And that I feel has to change. We need to help ourselves and we need to help build us into stronger individuals. Therefore, we can be more capable of creating that environment of wholesomeness and happiness and health and prosperity and all of that. So I developed this series of 6 episodes और उनका बड़ा एक सोच के फॉर्मेट बनाया था कि हम हर एरिया को, जनरल एरियाज को टच करेंगे in season 1, and I'm hoping that when this does well, I will continue and do a season 2 next year. So season 1 में पहला episode था Eating Right, The Art of Eating, और we have already published the episode. उसकी जो guest थी हमारी आयशा उमर, I think she is the great advocate of talking about food for healing, because she's somebody who went from a fairly unhealthy teenager to somebody who was an advocate for eating right. And उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ भी बिल्ड की अपनी एक्सरसाइज के थ्रू, बट बेसिकली डाइट. और मुझे अभी तक याद है कि जब मैं उनको मिलती थी उनके पास एक पोटली होती थी जिसमें उनके नट्स और बेरीज और she always had a snack in her bag so that she wouldn't crave and sort of submit to something unhealthy. सोडा वो नहीं पीती. मतलब अगर आप एपिसोड देखें, you know exactly what she eats and what she doesn't eat. So I thought that Aisha Umar would be the perfect guest to kick the series off on the art of eating. And that's so important for all of you, especially kids in your 20s. This is when you take food for granted कि junk food खा लो, ये खा लो, अभी तो we're young. But I think that यहीं से शुरू होता है, that what you're putting into your system will then, the छोटे छोटे building blocks हैं which take you through life. Episode 2, which is coming up, inshallah, on the next weekend, is about fitness. And my guest is the all-rounder of our cricket team, national cricket team, and Kainat Imtiaz. मैं उनसे पहले नहीं मिली थी, मगर उनको मिलके I was so impressed because she was so solid. And she spoke about fitness and she spoke about her father's role in her career development. And then she spoke about having a baby in the midst of her career, and then how her husband supports her. And it was such a heartwarming story. और उनके anecdotes, वो मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ बात करके, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा. वाकई a really motivating conversation. Absolutely, she's a superstar. तीसरी एपिसोड जो आप लोगों को मिलेगी वो है मदरहुड एंड मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि आई थिंक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं. और मोस्ट ऑफ अस हु डू विश टू गो थ्रू मदरहुड इन देयर लाइव्स, दे डू सफ़र पोस्टपार्टम डिप्रेशन, और प्रेगनेंसी भी मुश्किल वक्त होता है, और उसके बाद एक सोशल हमारे ऊपर का वो भी होता है, एक बर्डन होता है कि अच्छा बच्चा हो जाए, उसके बाद वेट गेन है तो वो वेट लॉस कब होगा, डिप्रेशन है, हेयर फॉल होता है, all of that, and just adjusting to taking care of another person, that responsibility and everything. So I thought nobody better than Minal Khan, and she was generous enough to sit down and talk about her entire experience of quitting in her career when she was at the top of her career. उन्होंने 2-3 उनके hit ड्रामे अभी रिलीज हुए थे. She got married and then she had a baby, which she'll talk about. Was it planned, unplanned, what happened, and then how she dealt with motherhood. She's very young herself. और उनकी भी ऑफ कोर्स कहानी बहुत इंस्पायरिंग है, और मेंटल हेल्थ की भी उन्होंने बात की है, वेट गेन की बात की है, ऑल ऑफ दैट. सो another very inspirational conversation. Uske baad we have one episode on skincare, beauty and skincare, because I think for all of us, we are all very conscious of the way our skin and our faces age.
स्किन सैग कर रही है या रिंकल कर रही है या मेलाज़मा हो रहा है, मुझे होना शुरू हो गया है, मुझे बहुत ट्रबल करता है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, या मिड लाइफ में हार्मोनल चेंजेस की वजह से you're sprouting hair in weird places on your face, all of these problems. And I also wanted to connect to a younger audience through this episode, so connected to Dr. Maliha, who's fantastic. And वो कहते हैं ना, experience के साथ बात जो है उसमें वजन आता है. At such a young age, she brought so much wisdom to the table, and she was so good to talk to and spoke sense. And मुझे वो भी बहुत मज़ा आया, और ऑब्वियसली मैंने बहुत सी फ्री कंसल्टेशन भी उनके साथ की, बिकॉज वो डॉक्टर ही क्या, जो फ्री एडवाइस जिससे ना ली जाए, वो मौके का फ़ायदा मैंने उठाया. बड़ा मज़ा आया उनसे बात करके, और उम्मीद है आपको भी आएगा. एंड ऑफ कोर्स गाइज, व्हेन यू आर वाचिंग दीज एपिसोड्स, एंड आई होप दैट यू विल, डू ड्रॉप कमेंट्स एंड क्वेश्चंस, बिकॉज अगर आप लोग सवाल पूछेंगे मुझसे या हमारे गेस्ट से, तो आई विल डेफिनेटली गो बैक एंड गेट आंसर्स फॉर यू. एक एपिसोड जो था, जो कि बहुत ज़रूरी है, वो है फाइनेंशियल लिटरेसी पे. बिकॉज मुझे ये पता है कि बाय द टाइम आई हिट 40, एट दैट टाइम मैंने कभी बिल नहीं दिया था खुद से, मेरे पास क्रेडिट कार्ड अपना नहीं था. आई वॉज ऑन अ जॉइंट अकाउंट विद माई हस्बैंड, एंड जो महीने का बजट मिला उसमें काम करो, ये वो. आई वॉज अर्निंग लाइक 30,000-40,000 rupees a month, and very happy. And this was when I was 40. And I was like very happy, because I was like, मेरा नाम बन रहा है, I'm building my brand, I don't want to earn money. लेकिन at some point in life you realize that you need to have a bank balance, and you need to understand your finances. You need to have security. You need to have money put away for a rainy day, all of that. So how do you do that? How much do you save? How much do you spend? How do you spend? Where do you spend it? And should women be independent? और मैंने, माई गेस्ट ऑफ कोर्स सफ़ीनाज़ मुनीर, आई एम सॉरी, मैं नाम ही नहीं उनका मैंने लिया, लेकिन सना सफ़ीनाज़ इतना बड़ा ब्रांड है, एंड एग्जाम्पलरी वुमेन, फैंटास्टिक टू टॉक टू. एंड सफ़ीनाज़ का मुझे अभी तक याद है कि जब इनके बच्चे छोटे थे, सना सफ़ीनाज़ दोनों के, सो ये लोग काम करते थे 11 to 1. If you wanted an appointment with them, you would have to get it 11 to 1. Why 1 o'clock? Because 1 o'clock बच्चों की छुट्टी होती थी, and they would go pick up their children every single day. So how to balance motherhood with a professional career? Where to step back? Where to take over? Again, a really, really insightful conversation that I had so much fun talking about. And एक मेरा pet peeve होता है हमेशा कि मैं देखती हूँ, और I understand कई औरतों की मजबूरी होती है, and things are not in their control. But when women go with their husbands who shop for them, and who choose the print they want to wear, and who pay for it, and then say that ये नहीं लो, ये लो, और ये इसके पैसे नहीं, और पैसे कहाँ खर्च किए, मैं बहुत ट्रिगर होती हूँ इन चीज़ों से. Because I think that if a woman is a working woman, she has an income of her own. But even if she's not, she still is running a house, which is a full-time job, and women need to be paid for it. And that money should not be part of the household budget. It should be their money that they spend on themselves, or they save, or they put away, and they have the agency to, spend wherever they want to without being accountable for it. So financial literacy, बहुत solid conversation with Safinaz, which you will, I'm sure, also enjoy. आखिरी episode जो है मेरा, वो surprise guest हैं, और full marks to everybody and anybody who guesses के कौन है. And we'll be talking about lifestyle, because मुझे पता है कि at 50 मेरा lifestyle जो है, because of my physical health not being in the best place, did get impacted. Last year I went to Paris. I could not manage 10,000 steps without great difficulty, without my legs cramping, without me like falling all over the place, and like बहुत instability थी. फिर मैंने strength training शुरू की at 49. इस साल जब मैं इस्तांबुल गई, तो I managed 20,000 steps. It was not easy, and it was a lot of up and down because सारा हिली है, but I managed it. And मुझे cramps भी नहीं हुए, और मैं मर भी नहीं रही थी. So मैं जिंदा वापस आ गई, मुझे बड़ी खुशी हुई. सीढ़ियाँ भी मैंने चढ़ उतर ली, ट्रैम्स भी की, सबवे भी किया. तो there was a huge difference. गो के डे टू डे लाइफ में नहीं लगता कि अच्छा इतना फ़र्क पड़ रहा है, मगर पड़ा, because वो muscle strength build होती रही. तो anyway, what I'm trying to say is that you invest in yourself to build a strong lifestyle that you want. Now, whether you like to travel, or whether you like to work, or you travel for work,
or you travel for with your family and that's your lifestyle, going to new places, trying out new experiences, adventures. It's endless. आप क्या करना चाहते हैं? अभी भी मैंने हॉट एयर बलून नहीं किया। एक वजह उसकी ये थी कि मेरे फाइनेंसेस बहुत स्ट्रांग नहीं थे, और दूसरी वजह ये थी दैट जो हॉट एयर बलून की बास्केट है उसमें आपको पाँव रख के ऊपर चढ़ के छलांग मार के अंदर जाना है। मैं कहा ये तो मैं नहीं कर सकती, एंड आई रिफ्यूज टू ट्राई एंड ब्रेक अ बोन और ट्विस्ट एन एंकल और समथिंग. दिस आई विल डू व्हेन आई फील इवन बेटर, which inshallah I will. I'm pretty confident about it. My guest is going to be a surprise, and full marks to those who guess it. So why did I name it the series Inner Star? बहुत लोगों ने बहुत नहीं, कुछ लोगों ने ये कहा कि सेलिब्रिटीज़ से हट के भी लोगों को इंटरव्यू करें. मेरे ख्याल है कि इनर स्टार जो है, एक तो ये है कि माय ऑडियंस, ऑल ऑफ यू हैव एन इनर स्टार दैट आई वांट टू मोटिवेट यू टू फाइंड. सेकेंडली, व्हेन वी टॉक टू सेलिब्रिटीज़, आप उनका स्टारडम देखते हैं एक बहुत सुपरफिशियल लेवल पे, कि जो आपको दिखाई देता है रेड कार्पेट पे या शोज़ पे या ड्रामों में. एक स्टारडम है जो विजिबल है, लेकिन उनके अंदर भी एक इनर स्टार है जो कि उनका पर्सनल स्टार है. सो मेरा मकसद वो कहानियाँ निकालना भी था कि एक स्टार आपको नज़र आ रहा है, एक सेलिब्रिटी नज़र आ रहा है जिसका एक सरफेस लेवल पे एक स्पार्कल है, ग्लैमर है, मगर उसके अंदर भी एक वो इंसान है जो कि ज़्यादा मे बी रियल है, और वो भी क्वालिटीज़ रखता है. वो क्या क्वालिटीज़ हैं? सो दैट वाज द पर्पस, एंड the idea is, of course, to reach out to all of you all over the world, and I'm so grateful for the audience we have, because Google actually told me this when we had the talk in Islamabad, that 60% of my audience is outside of Pakistan. So, that makes me really happy that I'm connecting with women all over the world. So the purpose is that, to bring all of us together, with the purpose to help each other strengthen, to build purpose and to find purpose in life. Absolutely. So ये था मकसद पॉडकास्ट का. अच्छा, पॉडकास्ट मैंने कर लिया डिसाइड कि 6 एपिसोड होंगे, ये होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. अब लुकिंग फॉर अ brand to collaborate with. And I have to mention here a huge shout out to CAC 1000 Plus, because I didn't want to collaborate with a brand that I didn't believe in or I didn't consume personally. I wanted to collaborate with a brand that was in sync with the ideology of the series, that believed in women's inner strength and energy and bone strength and the importance of having zest and energy and vitality. And somebody who would understand my vision कि हम क्या कहना चाह रहे हैं इस पॉडकास्ट में. So CAC 1000 Plus was absolutely fantastic. They understood my vision and they went along with it and they supported it. So, it's very important to build these alliances. Even जो उनका एक campaign का है ना mantra, हर रोज का डोज, वो भी is so in alliance with what I'm saying कि it's not like, one day you wake up and think you're going to be like this. The building blocks are every day. Every day you have to build that strength. So इतना हमारी synergy थी सोच में कि I was absolutely delighted to collaborate with them. So also I want to give a huge shout out to them. A big thank you for believing in my vision and making it possible. So that was it, and I thought it was important to connect with all of you to explain my vision for this podcast. It's not a random thing that I got up one day and thought कि अच्छा जी अब ये करते हैं, इसका नाम इनर स्टार रखते हैं. इसके पीछे बहुत पर्पस था, बहुत पर्सनल इसमें मेरी इंटेंशन थी. तो मुझे उम्मीद है कि आप सबके साथ ये कनेक्ट करेगा. And I would love to have all of you on board with your comments and your advice and recommendations कि अगर इसका हम सीज़न 2 करें अगले साल, तो आप कौन से गेस्ट देखना चाहेंगे या किन सब्जेक्ट्स पे आप चाहेंगे कि मैं बात करूं. Because there's an endless range of topics that we can talk about, and I would like to talk about them, and I really enjoy talking to all of you. So that's that, and I've spoken for a very long time. But thank you all for tuning in. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आही को, प्लीज़ कीजिए. Help me get to 100,000 subscribers. I have one silver button for Something Hot. I would like to get another silver button for Ahi as well. And this is content that is very close to my heart, whether it's Fashion Fortnightly with Tabish, or it's these 101s, or it's my very, very insightful conversations with different personalities.
all of these programs, or my opinion pieces with Mavish, or even हम जब Love Guru करते हैं तमकिन के साथ, it's all content that is very close to me, and I really enjoy making this content for all of you and also for myself. So do subscribe and hit the like button, and I hope that you will be tuning into the podcast and you will be leaving your remarks on every episode. And yes, a big thank you to all of you. Khudafis.